2 years, and if someone showing 4 years of experience. So Uh-huh. other than Power BI, what tool we have to we are used to know, or other like SSAS or something different that you said? Okay. See, Power BI and SQL. So these are the two basic things, okay, that you have to keep in mind while applying the jobs, and we are learning. So as I said, SSAS. So sometimes they ask Azure as well, right? Because in some of the companies, Azure is used as a backend to pull the data and do some data modeling, data engineering, and then to bring the data in the Power BI. So people also expect some companies expect that you should have a fair knowledge on Azure as well. So it is not compulsory, it is not at all required to have the knowledge, but if you have, that is well, good. So you have also basic knowledge what is Azure. So so what, according to your question, like uh, what do you mean to say, like yeah, so according to the job description and according to the requirement, the it will vary, right? So some of the companies will expect you should know Azure, some of will not, some of will companies expect like you should know the basic ETL operation and you should know how to develop a Power BI report. So it varies upon the different companies expectation and different uh, job description as well. Am I clear, or any more I can, did you get the point, or like use your question answered? Yes, yes, yes. So like that's what I said to you all, like you have to start going through the job descriptions. So if 100 openings are there and out of 100, maximum of the openings, like let's say 60 to 70% of the openings are demanding a skill that you need to have as a Power BI developer. As I said, SSES. So SSAS is very linked to Power BI. So some of the company use SSAS. So you should start learning that on your own. So it is not very difficult to learn that skill, right? So that will improve your knowledge also, and your competence will be increased when you give interview, right? Yeah. So any more doubts on this page? We can move on to the next, or uh, anybody any doubt? No, no doubt. So you are clear, like what we have to do. Those we have started taking the SQL training, or those we are in between the Power BI. What we have to do, like you have to start searching the Power BI reports and start working on your final project. What can be your final project, and build those reports. And you have to prepare a thesis for your Power BI reports as well. Like people, interviewer will ask, tell me about your last project. So you should be able to answer the question very correctly, like starting from the requirement gathering to the delivery, right? So how you take your data into the Power BI, and then what kind of operations you do, what was your role in that, and then how do you develop the Power BI report, and what challenges did you face during the development of the Power BI report. So these all questions should be like you should be able to answer those questions, and more specifically you should be able to explain your report more correctly. Like some of the interviewer also ask, can you share your screen and tell you explain any Power BI report you have. So at that point, you should have a Power BI report in your PC, or some of them give you an assignment, or they give questions, a scenario, and a problem statement, and data as well in the Excel, and they give you a 2 days of 1 days of time, and they say like perform this and give me the final output file by tomorrow EOD, or let's say after 2 or 3 days. So you should also be prepared for that. So I have few of them. I will be sharing those with you all so that you can think about that. Okay. So are we clear? We have to focus on the English communication. We have to prepare for self-introduction. Then we have to start different Power BI reports, and we have to be there to like finalize our Power BI project. Those will be showing in our resume, right? Then we have to start preparing for the project once it is built, and then we have to prepare a thesis as well, like a one pager, so that we can explain it correctly to the interviewer. Then we have to parallelly start practicing SQL as well.
so that interviewer ask any joins, any queries, you should be able to write. So in interviews, very basic questions are asked. Okay. And for the tough, they will give you some time, or they will give you some assignment to complete. Time to for They will give some time to complete those assignments. Okay. And then finally you have to start building your resume also parallelly, so that once you complete your training, you should be able to upload the resume and start searching the job immediately, and you should not waste the time after the training. Okay. So I will give you some examples, like why we have started this process from now, so that you should not waste your time and you should be able to get the job as soon as possible after the training. Okay, so there are some examples in the past, like people complete the courses, and these instructions are given time to time basis from Yogesh, Rahul sir. So like resume preparation, project preparation, but people do not follow those on the time. Okay. And some people get engaged into other things after completing the training. They get some personal work, or they get into some other personal things, or they do not start immediately after the training. Okay. So my point is, like, you should not waste the time during the training, so that you will be able to start for efficient job search once you complete the training, right? So that's why we have organized this session, and we have noted this point, so that you all should be in line to the process, and you will not waste time after the training is finished, right? Is my point clear? Any doubts on this? Sir, Yeah. sir, can we get some template resumes? Because as we, I mean, at least, I Yeah. mean, a lot of us are not from the technical background. We actually Ah. don't know how the resume looks like. Yeah. You will get the template resumes, no problem. Okay. So in your case, your course is done or it is in progress? It is in progress. Okay, so you just focus on your project, okay, and Okay. the Okay. explanation of your project and about your self introduction, and the technical knowledge. So the draft of the resume will be shared to you. Like as and when you are starting to prepare, just ask me. Okay, I will share the draft, and then you can start preparing that. That is not an issue. Okay. Okay, but Okay, sir. the projects, the use cases inside the resume should be done by you. You should have a Power BI file for that, so that you will be able to explain interviewer correctly if any questions asked from that. You understand my point? Yes, sir. Okay. Anyone, any doubt on this page or previous until now, or any discussion? But sir, we don't know about the company, so how मतलब like कौन से प्रोजेक्ट पे वो काम करती है, तो हाँ हम हाँ हाँ, तो वो सब देखो, अभी आपका कोर्स चालू है, राइट? यस, हाँ आपका चालू है। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, राइट? तो अभी नहीं, आपका काम यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप गूगल पे जाइए और अलग अलग पावर बीआई रिपोर्ट को सर्च कीजिए, उसके अंदर क्या होता है उसको सर्च कीजिए, और अपना कुछ तो बनाने का चालू कीजिए। जब भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप अभी जैसे एक हफ्ते में ये कर लेंगे सपोज, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है, मतलब हम लोग उसको फिर डिजाइन करेंगे। मतलब जैसे आपने कुछ 2-4 यूज केसेस बनाए हैं, सपोज आपने एक सेल्स का एक रिपोर्ट बनाया, एक ऑपरेशंस का रिपोर्ट बनाया, मार्केटिंग का रिपोर्ट बनाया, ठीक है? आप Yes. अगर आप उस पर कॉन्फिडेंट हो, तो हम लोग उसी में से कुछ कन्वर्ट करके एक आपका फाइनल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है? बट सर कैसा है, जो मतलब डेटा अवेलेबल है नेट पे, हाँ तो बेसिकली वो तो कॉमन डेटा है। तो जो ओके, इंटरव्यूअर है, तो उसको तो हाँ ये चीज भी समझ जाएगी ना कि ये मतलब दिस इज कॉमन डेटा, हाँ, तो तो क्या वो हुआ? Yes sir, I have same हाँ question. हाँ, So तो वो हाँ, फेक बोलो बोलो। दिखेगा ना सर? क्यों फेक वो दिखेगा? फेक दिखेगा ना, क्योंकि क्यों कॉमन? हाँ हम लोग मुझे बताओ। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है जो ये बनाती है, एफएमसीजी गुड्स बनाती है। तो क्या दूसरी कंपनी नहीं है जो एफएमसीजी गुड्स बनाती है? नहीं बनाती है, बट मतलब हाँ बेसिकली जैसे रिपोर्ट्स बोलो या फिर उनके हाँ डैशबोर्ड, जैसे रिपोर्ट्स या हाँ प्रिपेयर करेंगे, हाँ या फिर जैसे वो जो डेटा हम लेंगे, तो वो हाँ तो हाँ, कॉमन दिख सकता है थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ। कॉमन कॉमन तो रहेगा ना, वो कॉमन तो रहेगा। सेल्स में आपका प्रॉफिट, नेट सेल्स, ये सब चीज तो कॉमन रहेगी ना। हर हर कंपनी का नेट सेल्स का एक बट केपीआई होता बट है, प्रॉफिट का सेटली केपीआई बट होता सेटली है।
अब हाँ देखिए कोई है जैसे सिटी कंट्री, ये भी हाँ कॉमन, हाँ उस हाँ। केस तो में कैसे? अरे तो कंपनी को नहीं बताना है ना, इंटरव्यू को नहीं बताना है कि यही मेरा ओरिजिनल रिपोर्ट है करके। आप कंपनी का डेटा कैसे शेयर कर सकते हो इंटरव्यू के साथ? कर सकते हो क्या? हम्म। नहीं कर सकते, नहीं। दैट इज प्राइवेसी पॉलिसी। तो आपको बताना है कि मेरा प्रैक्टिस रिपोर्ट है, ये मैंने प्रैक्टिस किया है, ये मेरा ओके। कंपनी के रिपोर्ट से ही सिमिलर है, बट ये मैंने गूगल से डेटा सेट डाउनलोड करके ये रिपोर्ट जनरेट किया है। तो ओके। इंटरव्यूअर भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको ओरिजिनल रिपोर्ट दिखाना है, और आप भी उस इंप्रेशन में मत रहो कि आपको ओरिजिनल रिपोर्ट ही दिखाना है। दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ब्रीच ऑफ कंपनी डेटा पॉलिसी हो गया, और ऐसा करना भी नहीं कभी लाइफ में। ठीक यस। है ना? तो इंटरनेट पे काफी अच्छा डेटा होता है, सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट व्हाइल बिल्डिंग द रिपोर्ट। आप ऐसे डाउट मत लाओ मन में, ठीक है? और यस। व्हाट आई एम टेलिंग यू, इंटरव्यूअर सी हाउ स्किल्ड यू आर, हाउ नॉलेजफुल यू आर। ठीक है? वो लोग डेटा तो देखते ही है, बट वो डेटा फिर अगर 10 MB का क्यों ना हो, या फिर उसमें 100 ही रोज क्यों ना हो, उसमें से आपने आउटपुट कैसे लाया है, ठीक है, उसमें से आपने डैक्स कौन से यूज किए हैं, उसमें से आपने इफेक्टिव डेटा मॉडलिंग जैसे मैंने बोला स्टार्स की वहां यूज किया है क्या, ये सब चीजें वो लोग देखते हैं, और इसको वैल्यू होता है। ठीक है? यस सर। तो ये सब चीजों पे फोकस करो, टेक्निकल टर्म्स पे फोकस करो, कंसेप्ट्स पे फोकस करो। और ये सब चीजें जो डाउट है ना, आपके जिनाइन डाउट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये डाउट नहीं आने चाहिए, अच्छे डाउट है, बट दोस कैन बी ओवरकम, उसके वे आउट है। और कोई भी ऐसे मतलब कंपनी का रिपोर्ट नहीं शेयर करना चाहिए कभी भी। ठीक है? तो प्रैक्टिस डेटा सेट से ही काम हो हेलो जाता है। सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। इंटरव्यूअर पूछता है क्लाइंट हाँ कौन था, कौन सा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या था, हाँ, तो वो बताएंगे ना, वो बताएंगे क्लाइंट ना हम कहाँ लोग, से था, वो ऐसे बताएंगे, डोंट पूछता वरी। है। हाँ तो पूछता है तो ओके बताएंगे ना हम लोग, वी हैव क्लाइंट्स, डोंट वरी। वी हैव ओके क्लाइंट्स ओके। एंड वी आर डूइंग दैट एज वेल। सो एज अ लाइक जो अपना कंपनी है उसमें हमारे क्लाइंट्स है, हम लोग उनको ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ETL सर्विसेज जो है, हमारा पूर्णा डेटा करके एक ERP प्रोडक्ट है, जिसमें सारा जो SQL का ऑपरेशंस होता है, और पावर BI के रिपोर्ट्स भी हम लोग देते हैं। ठीक है? तो वो सब है, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। ठीक है? और हर इंटरव्यूअर नहीं पूछता आपका क्लाइंट कौन सा था। ठीक है? वो 100 में से एक दो पूछेंगे। ठीक है? और पूछ भी लिया तो आप बता सकते हो, डोंट वरी ऑन दैट। ठीक है? So at the year, but in case of resume preparation, we have to include all the details in that, no? Means company details and the project details. Company details you have to enter. Project details also you have to enter. Company details means in which company you are working, right? Or you are asking Yes. about the client which you have worked on. Means is it okay to include that thing? Then we can. Means I'm asking you. No, you can include the company, like our company name that will be there. So Yes. like you are using the documentation process for No, job no, sir. search. No, no, So sir. you Still, have to just, okay, you have to just enter the project name and the duration of the project, like when you have started, like, or the Power BI, you have 2 years experience in Power BI, SQL 1 year, and the use cases, like last 4 to 5 projects that you have done, yeah, that you have to mention your resume. okay. Any more doubt on this? So for the resume preparation, we need to take help of you. Yeah. I will help you, no problem. Okay, I will provide you the draft resume, and then you can edit that, and you can use different formats, of course. Don't have similar format, that will also be a point of doubt. So don't do that, use a different format, but the content can be like, the content structure can be taken like that, that can be followed, like how we should explain our project, right? How we should put the technical things inside, what skills should we have, right? So that can be taken from that. Okay, so if we are working somewhere, so we need to include both the data in the resume. Means this Power BI and also the same data where we are working. See, that is your different case. So we have to discuss. Like, let's discuss it. For example, like, what exactly are you working on? In which field you are working on? Yeah, I'm working in investment bank. Investment banking. Okay. So in investment banking, like you get some data, any MISS, any Excel file you get. Yes, right. Excel files. Okay.
So what he can do, and any functional knowledge you have related to investment banking, like what do you actually do? So it will be an ideal example for everyone in this room. Okay, so what is your role into investment banking right now? So actually, my role is means I am APM, Associate Process Manager. Okay. Means just in the April I have promoted. So okay. So I reconcile the dividend bit. So I'm working for dividend. Okay. Okay. So in short, you are making the reconciliation reports, right? Yes, right. Okay. So what we can show and what we can do in your case, others please also understand. Like we have to present ourselves in this way. So this, what is your name? Can you tell me your name? Shashikant Pawar. Shashikant. So see, now he is working into investment banking, and he has some functional role, like he is making some reports like dividend reports. Like for dividend reports he has some data, so that data is in the Excel form, right Shashikant? Yes, right. So what you can do is like you can tell like my data is in the Excel form, okay, or maybe in the form of SQL server. So if the data is more and it is live, so it is in the SQL server. So I take that data from Excel and get that data in Power BI, okay, and build the dividend report in Power BI, and then share it to the users. So this can be a basic I can tell you. And then what you can do for investment banking, you can search on Google, or like the similar data you use in your daily operations. You can just develop the few Excel tabs, Excel sheets in your personal computer, and then get ready the dummy data, and then can build the Power BI report. Or you can just Google dividend data on Google, like Power BI dividend reports on Google, or like dividend data, raw dividend data, and then you can get number of websites like Kaggle, GitHub. Those provide data, or any other site which have data. Okay, so sample raw data you will get on the net. Then you have to check that what I do is exactly the same or any addition is there. So you have to check that, and you can then build a report from that. And you can just start thinking like if you have some dividend report building, then you have to search like what KPIs you are using. Like, so I'm not aware about that, but can you tell me any two important KPIs that you use while building a KPI dividend report? Like any specific number Actually, that yeah, there is a one application inbuilt of application. So we get data from that application and we make the reports. okay. And on the basis of that reports, we Uh-huh. have to investigate the breaks, and we have multiple applications, client applications. So Okay. later, this process is later after the Okay. preparing the report. Fine. And after that, we have to put the comments and all the data in that Excel again. Okay. 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 So So each any and every uh-huh. each and every event. Okay. So Yeah. this can be in the tabular form then, right? This can be a big table, right? So that each and every row and column will be updated according to the Yes. details, right? So you can Right, tell right. that you can tell and you can explain in that way. You don't have any dividend share or like net sales or profit, any unique KPIs you don't have, but you have any very specific, like very granular information in your report, right? So you can just build a table and explain the project in that way. You got my point? So you can be a techno-functional analyst in that. Like you know the technical Yes. of Power BI, and you know the function of like how to handle the dividend, how to handle the dividend reports, how to interact with the client, take the requirement, and build the reports out of that. Okay, so you can work in that way. Yes, right. Right. So we can connect Yeah. later also for any Yeah, right. doubts of yours. Okay. Okay. Thank you. Okay. And then yeah. So to do after the training. So this is the last part. As I सर said, you have मुझे एक to. डाउट Yeah. है, सॉरी Yeah. Tell me. No problem. सर जैसे मैं अभी सिविल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ, मेरा सिविल में इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हुआ है, सिविल में एमटेक भी कंप्लीट हुआ है, और मैं सिविल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। तो प्रीवियस मुझे एक्सपीरियंस जो है मतलब वो पूरा का पूरा मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ एज ए लेक्चरर। ओके। तो मैं एक्सपीरियंस अपना कैसे शो करूंगा, कैसे उसको डिवाइड करूंगा?
तो अभी आप वो एक्सपीरियंस दिखाने वाले हो या फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर रहे हो लर्नवेल में? हाँ, मैं डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने वाला हूँ, बट मैं हाँ 4 साल हाँ का तो कर नहीं सकता पूरा का पूरा। हाँ, तो उसका है ना सोल्यूशन, knowledge? हाँ उसका सोल्यूशन निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा आपका। ठीक है, वो तो 2+2 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपने 2+2 ईयर्स लेक्चरशिप किया, उसके बाद आपने कोर्सेज करके आपको एक ये जैसे अपना कंपनी है इसमें जॉब मिला, ऐसे बोल सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, तो 8-8 साल मतलब 9-9 साल करके आए लोग, टेंशन मतलब, ओके 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 है ओके। ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बस अभी ये फोकस करो कि आप ट्रेनिंग अच्छे से करो, आप रिज्यूम बिल्डअप अच्छे से करो, आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो। ठीक है, और यस यस आपका आपका नॉलेज अच्छे से बिल्ड हो, इस पे फोकस करो आप, ताकि आप इंटरव्यू अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाए। ठीक यस सर, यस। है ना, तो इंटरव्यू सर ये क्वेश्चंस। 1 ईयर, हाँ हाँ, सर 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस से एक्सपेक्टेशंस क्या रहते हैं उनकी? मतलब एक्सपेक्टेशंस बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, 1 ईयर एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस में। देखो, एक्सपेक्टेशंस तो अभी वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो बोल रहे हो आप, वो मे भी बढ़ सकता है। हम्म। ठीक है, मतलब हो सकता है कि अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको थोड़ा दो एक मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप, या फिर आपको जूनियर मेंबर के साथ भी काम करना है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, काम तो एक ही करना है आपको पावर बीआई डेवलपर में। ठीक है, पावर बीआई डेवलपर का काम तो एक ही होता है, बट उसमें हो सकता है कि अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपेक्ट करेंगे आपको थोड़ा डेटा इंजीनियरिंग भी आ जाए, मतलब आपको ईटीएल ओके। ऑपरेशन भी करते आना चाहिए, जैसे हम लोग एसक्यूएल में करते हैं, वैसे आपको बैकएंड में हम्म। एज्यूर में डेटा हैंडल करते आना चाहिए, पाइपलाइन बनाते आनी चाहिए जीसीपी में, ऐसा वो लोग थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट बेसिक स्किल्स तो यही रहेंगे। अगर आपको इतना बेसिक आता है ना, तो यू आर कैपेबल इनफ टू डू अ जॉब ऑफ लाइक 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस का है। ओके ओके। ओके, ठीक है, एनी मोर डाउट ऑन दिस? लाइक प्रीवियस में कोई डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पे जाते हैं। No doubts. No doubts? So, No doubts. okay, so some of you also have gaps into your career, right? Some of you have done the job previously and then but take a gap, and then now you are doing courses, right? And you are taking, Yes sir. you are also taking the documentation process from Learnwell, right? So that Yes has sir. to be also started parallelly now, okay? Because it takes some time to complete the process from backend also. Like there is some operation process, we have to keep some records, and we should be able to provide you all the necessary requirements when as and when you require. Okay, so those all of you, those who are opting for documentation process, so get contact with Yogesh, right? And Okay sir. whatever requirement is there, just complete, like you have to submit any documents, or is there any other requirement, so just ask Yogesh and start that process as well. Okay, because once you need the final documents, like any formalities, that can be done immediately. Those who are working somewhere else, they don't have any problem, just like we spoke with a person who is working on investment banking, so his case is different. But the other students, those who are not working anywhere but they need support, some special support, so we are offering that as well. Okay, so please get in touch with Yogesh for that, and I'm also there later to help you all. Okay, and then we'll go on to the third agenda of the meeting, what we have to do after the training. So as I said, you have to be ready with your project, and then the resume also we should work on the resume parallelly. And once the training is finished, like mostly if you are able to do on the next day or the same day, it is very good, like you will save your time. You should upload your resume to the job portals like LinkedIn, Indeed, Naukri, and Hirist, or I will say Jobble. So there are a number of multiple sites on the Google or say a web. So you should apply and you should upload your resume and make your profile on that. Okay. So this is the very first step after the completion of training you have to do. And you have to search for the Power BI developer jobs, Power BI developer 2 year experience jobs. This keyword should be there, and then you will get the relevant openings. Okay, and then what is the main important thing that you Abhay, can have? you please repeat once? I said once you finish your training, then you have to start
you have to start uploading your resume to the multiple job site, like that is LinkedIn, Indeed, And what Naukri, would be and the key experience? 2 years as a Power BI yeah, developer, Power right? BI developer 2 years, and overall experience, like if you are opting us with the document What process, about we can say 3 years. Like for okay, SQL, you have worked 1 year and then 2 year on Power BI. So we can show you total 3 year of experience. Okay. okay, Okay. So got then apply to the Power BI developer jobs. Okay. Then the important thing which I wanted to tell you is like we have some students in the past batch or in the present, you can say just now 3 days ago one student got placed. Okay. So he started he completed his project class in the month of August. Okay. So I got in contact with him in the last week of August. Okay. And then he started rigorously from that point on his project. And once he finished his project in 2 weeks, then he started searching for job very rigorously from that. And then he got placed in the last week. Okay. So for that, for him, it was like he was also having a gap. He has taken some gap for government exam preparations. Okay. So it took some time for him to learn some things, but I will say if he would have prepared his project during the training, then he could have been placed earlier as well. Okay. So my point is like you have to be proactive. You have to ask the things and you have to get the things complete within time, right? And as I said, apply daily with maximum number of jobs. So there are number of jobs available for Power BI developer across the all portals. You will see Naukri. So now Naukri and LinkedIn, I will speak specifically. So there is a easy apply option. If some of you have applied, so easy apply option, what happens? We can apply to the jobs in the one click only. Okay. So our profile will be shared to the employer in one click. Okay. But there are other portals as well, or in the LinkedIn or the Naukri or Indeed, we have to go on to the company site and apply to the jobs on the company site as well. Okay. So you have to follow that process as well. Okay. You have to go on to the company site, create your profile if they are asking, or any basic detail they are asking, and upload resume there as well. Okay. So this has to be done, and you should apply at least maximum possible jobs, like 30, 25 to 30 jobs, I will say. Now at the point time, if you have mobile and you just search Power BI developer 2 year experience job, you will get more than 70 jobs. And if at all the jobs are not relevant, like if the 50% of them are asking any additional skills, okay, but 50% of the requirement will match, like Power BI and SQL will be there. Okay. And you can apply those jobs daily. So maybe there are some repeated percent of jobs also. Let's delete 20%. So 20 से 25 तो जॉब मिनिमम होंगे जो आप डेली अप्लाई कर सकते हो अक्रॉस ऑल द पोर्टल्स आई एम सेइंग. ओके. तो ये रिगरसली फॉलो करना है वंस यू अपलोड योर रिज्यूम. कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, दो तीन जॉब को अप्लाई करते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे कॉल ही नहीं आया. ठीक है. तो ये थोड़ा आपको चेंज करना है. ठीक है. हाँ बोलो, कोई है? अबे हाँ हाँ what background basically those students apply for Power BI. हाँ. So what background are they are applying for that? सो बैकग्राउंड देखो इसमें जैसे आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने क्या इंजीनियरिंग किया या फिर जॉब कर रहे हो? BTech. ओके. कोई एक्सपीरियंस है आपको? Yes, I am working in NCDX Market Limited. ओके. स्टॉक मार्केट में हो मतलब? Yeah. ओके. सो देखो इसमें क्या है, ये जो मतलब स्पेसिफिक अगर डोमेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो ओपनिंग आती है या फिर जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, तो वो लोग डोमेन स्पेसिफिक ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते. ठीक है. वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जो स्किल्स है पावर बीआई और सीक्वल की वो आनी चाहिए. ठीक है. वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको डोमेन नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए. देखो डोमेन नॉलेज एक टाइम फ्रेम में 1-2 हफ्ते के अंदर, 1 महीने 2 महीने के अंदर डोमेन नॉलेज के आप एक्सपर्टीज हो सकते हो. बट ये जो पावर बीआई के कॉन्सेप्ट्स है या फिर जो स्किल्स है वो मस्ट है. मतलब अगर बैंकिंग डोमेन में हो तो आप फार्मास्यूटिकल में जा सकते हो, आप लॉजिस्टिक्स में हो तो आप फाइनेंस में जा सकते हो,
ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड या फिर जो आपका डोमेन है वो फिक्स रहेगा आगे जाके, दैट कैन बी चेंज। आप बैंकिंग में हो, आप ई कॉमर्स में जा सकते हो, ठीक है, वो इशू नहीं है, आईटी में वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको फ्लेक्सिबल, मतलब आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट में हो, आपको दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट होना है, या फिर एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट होना है, तो हो सकता है कि क्लाइंट का बिजनेस मॉडल अलग है, ठीक है, तो आपको बिजनेस मॉडल का स्टडी करना है, उसका केपीआईज का स्टडी करना है, और अपना बेसिक नॉलेज जो है ईटीएल का और पावर बीआई का वो अप्लाई करके उसके रिपोर्ट डेवलप करनी है, राइट। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, बैकग्राउंड और जो आप डोमेन बोल रहे हो वो फिक्स नहीं रहेगा कभी भी, ठीक है। Okay, I'm having one question. या Suppose if a person is having 10 plus years of experience, and now हाँ if I'm doing this one, हाँ so are there ample opportunities in the market to get this job? Yeah, so what exactly you are working on right now? 10 years experience I'm on what? I'm working in manufacturing industry as a Okay. purchasing buyer. Yeah, so no problem. So what you But can do, but like, my yeah, yeah, overall uh-huh. experience, like since past Yeah, 5 years, I'm yeah. dealing with Microsoft Excel only. Okay, okay, fine. That is good. Yeah, yeah. So Because what, yeah, what we can my do, concern is like yeah. 10 years ka experience is a big task नो नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। actually सो to 10 साल आपको पावर बीआई नहीं दिखाना है, आपको क्या करना है, आपका जो 10 साल में से लेट से 6 या 7 ईयर्स है, आप 6 से 7 ईयर्स आप अपना कोर जॉब कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग वाला, ठीक है। हम्म फिर आप उसके बाद जैसे आप बोल रहे हो कि आप एक्सेल से हैंडल कर रहे हो, आप रिपोर्टिंग में आए, ठीक है, ऑपरेशन के रोल में हम्म आए, ठीक है, और फिर हम्म धीरे धीरे आपका कंपनी जो है एक्सेल में रिपोर्ट्स बना रहा था, एक्सेल में रिपोर्टिंग कर रहा था, हम्म टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग एक्सेल में कर रहा था। तभी माइक्रोसॉफ्ट ने, हम्म मतलब अभी ये पावर बीआई भी देखोगे आप तो 4-5 साल से बूमिंग में चल रहा है अभी भी। 2006 से हाँ, 2006 से, तो अभी 2022 चल रहा है, मतलब अभी ऑन ग्राउंड लेवल आप देखोगे तो पावर बीआई दिख रहा है, हर मार्केट में दिख रहा है, हर हर इंडस्ट्री में दिख रहा है, हम्म ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि आपके यहाँ पे पावर बीआई का प्रोजेक्ट आया, मतलब पावर बीआई का लाइसेंस कंपनी ने लिया और आप फिर उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया, ठीक है। सो नाउ okay दैट्स व्हाई बिकॉज यू आर यूजिंग पावर बीआई सिंस लास्ट 2 to 3 years। तो 10 साल से 10 साल नहीं दिखाना है, 2 से 3 साल दिखाना है, सो दैट आपका जो इंटरव्यू है उसी हिसाब से होगा और क्वेश्चन भी आपको उसी हिसाब से पूछे जाएंगे। और डोंट वरी ऑन दैट, आप वो शैडो निकाल दीजिए कि आपने 10 साल मैन्युफैक्चरिंग का काम किया है और मैं कर पाऊंगा, क्योंकि आपका बेस क्लियर है, आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, राइट। एंड पावर बीआई इज 10x ऑफ एक्सेल, ठीक है। इट इज right बिल्ट ऑन Hmm. एक्सेल, इट इज बिल्ट ऑन एक्सेल, सो दैट इज गुड फॉर यू, ओके, एंड बी कॉन्फिडेंट Okay, ऑन दैट, ठीक है। okay, no problem. Thank you. Sir, या I mean, I just want to ask you whether you will be addressing all such queries individually, or I mean, because I am from completely non-technical background. I was a teacher, ओके, uh, that too nowhere related to computers. So हाँ I हाँ। just wanted to ask you, I mean, how to go about it. Now, my approach towards it will be as a fresher or what? So so you have experience, right? After the graduation, you have some experience, and so you will be opting for documentation process, right? Yes, I have to, because Yeah, teaching profession yeah, का और correct, इसका कोई correct, relation नहीं है. correct. So don't worry. So we have some common sessions like this in future also, and if you require, we can connect this personally as well. Okay, no issues. So ये Okay, जैसे sir. सेशन हुआ है, ऐसे हम लोग कुछ इंटरवल में लेंगे, so that your all queries and concerns will be addressed, and where you are on these points. So we will be reviewing those. Okay, don't worry on that. Okay, sir. Okay. एनी अदर डाउट्स? सो मैं जो बोला ना कि आपको प्रोएक्टिव रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग, यू आर ऑप्टिंग फॉर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और नॉट। आपने कोर्स किया है, मतलब यू आर कैपेबल इनफ टू प्रेजेंट योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू, बट यू हैव टू प्रैक्टिस रिगरसली, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट रिगरस, मतलब कॉन्सेंट्रेट आपको कंटिन्यूअसली करना है, और मतलब एक डेली रूटीन बनाना है आपको। मतलब जैसे 2 से 3 घंटे आपने सीक्वल पे कर लिया, 2 से 3 घंटे आपने पावर बीआई पे कर लिया, जैसे आपको पॉसिबल है, मतलब जितना आप इनपुट दे सकते हो उतना अच्छा है, और 2 से 3 घंटे आपने जॉब सर्च पे दे दिया, तो ऐसे आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है डेली बेसिस पे, तो आपका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। हेलो और सर। हाँ बोलिए।
सर एज ए फ्रेशर्स हाँ, पावर बीआई में नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेगी। एज अ फ्रेशर मतलब आप विदाउट मतलब एक्सपीरियंस बोल रहे हो? हाँ एज अ फ्रेशर यार देखो, अभी जो कंपनीज एक्सपेक्ट करती है ना, ऐसे करते हैं कि बंदे को मतलब आना चाहिए काम, ऐसे 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम देखते ही ये लोग, ऐसा है। क्योंकि क्या है, फ्रेशर को सीखने में टाइम जाता है, राइट? आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, 4-5 महीने जाते हैं उसमें। आप उसको आने के बाद एकदम 1 महीने में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कंप्लीट आउटपुट दे, ठीक है? तो कैंपस लेवल पे जो काम होता है वो अलग होता है। तो उसके लिए फिर आपको जैसे ग्रेजुएशन जैसे हुआ, तो उसमें आपको 1 साल के अंदर फ्रेशर में आपका डेफिनेशन बन जाता है कि ठीक है 1 साल में जॉब सर्च कर रहे हो आप और आपको जॉब मिल गया। बट आपका ग्रेजुएशन कब हुआ है? 2018। हाँ, तो 2018 के बाद अभी 4 साल हो गए, तो 4 साल में हाँ आपका गैप हो गया, तो थोड़ा फ्रेशर लेवल पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। आपका कुछ एमटेक वगैरह कुछ ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है? नहीं, हाँ, तो थोड़ा आपको पोस्ट उसमें, ग्रेजुएशन डिप्लोमा, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया। हाँ, तो थोड़ा वो स्किप करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, तो जाके मार्केट में वैल्यू बनेगा। मीटिंग शायद तो सर खत्म हो रहा है, तो प्लीज रिज्वाइन कीजिए, है ना? 1 मिनट ओके के सर। अंदर खत्म हो जाएगा, सो विल कंटिन्यू एंड देन रैप अप। तो आपका क्वेश्चन कंटिन्यू तो करते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ हाँ पैसा मैनेज हो जाएगा ना सर, हाँ, एक्सपीरियंस? डोंट वरी, आप बस ये ट्रेनिंग पे फोकस करो जो चल रहा है, ठीक है? ओके सर। मैनेज हो जाएगा वो। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रिपरेशन करते हो। बाकी डॉक्यूमेंटेशन हाँ हाँ प्रोसेस एंड ये सब का टेंशन मत लो, वो तो हो ही जाएगा, ठीक है? और सपोर्ट करने के लिए हम लोग है ही, बस आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है ओके सर। ना?